Hello everyone. Today we learn about classification of the bone. आज के क्लास में हम पढ़ेंगे बोन के डिफरेंट क्लासिफिकेशन, बोन कितने टाइप्स के होते हैं, राइट? सो फर्स्ट थिंग्स इज द व्हाट इज बोन. सो बोन्स आर द कनेक्टिव टिश्यू मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट. सो बेसिकली बोन जो है इट्स अ काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जो कि कैल्शियम एंड फॉस्फेट से बना होता है. Second is the what is the cells of the bone. The osteocytes is the cells of the bone, and it's very important term for the MCQ questions for the examination of the like competitive exam and academic exam also. Next things is the number of bones. So in the human beings there are approximately 206 bones. A baby body has about 300 bones at birth, and they eventually fuse to form the 206 bones at and the adult इन द नॉर्मल पर्सन. सो बेसिकली जो बोन्स के नंबर है, बोन्स की संख्या है, वो बच्चों में ज्यादा होती है एज कम्पेयर अडल्ट. बिकॉज जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे जैसे हमारी बॉडी ग्रो करती है, जो कुछ बोन्स है वो फ्यूज होते हैं, और जैसे वो फ्यूज करेगा, सपोज कि अगर दो बोन है, दो बोन फ्यूज करेगा तो वो इवेंचुअली एक सिंगल बोन में कन्वर्ट हो जाएगा. तो यही रीजन है कि एट द टाइम ऑफ बर्थ और छोटे चाइल्ड में जो होते हैं और बोन्स की जो नंबर होते हैं, जो संख्या है वो ज्यादा होती है, अप्रोक्सीमेटली 300 बोन होते हैं, क्योंकि धीरे धीरे वो फ्यूज होते होते 206 बोन में वो कन्वर्ट होते हैं. सो दैट इज द एक्चुअल नंबर एट द एंड ऑफ और आफ्टर द फ्यूजन एक नॉर्मल एडल्ट पर्सन. So all bones are classified according to their shape and functions, like long bones, short bones, flat bone, irregular bones, and sesamoid bones. So हम अपने बॉडी के जितने भी बोन्स हैं, किसी एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में जितने बोन्स होते हैं, उनको हम डिफरेंट कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं, हम क्लासिफाई कर सकते हैं. सो आगे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट इज द long bone. So what is long bone? As you can see in this image, this is the example of the long bones. So ये जो example है, ये एक long bone का example है. Basically, this bone is called femur. And also this is the longest bone in the human body. ये हमारे body का है सबसे longest bone. A long bone is one and that is cylindrical shape, being longer than it is wide. It means जो long bone होते हैं वो cylindrical shape में होते हैं. Being longer than it is wide. It means इसकी जो length है वो ज्यादा होती है as compared width. जैसे कि हम इस इमेज में देख सकते हैं, जो हमारी ये बोन है इसकी लेंथ काफी ज्यादा है, इसकी जो width है वो बहुत कम है एज कम्पेयर जो इसकी लेंथ है width बहुत कम है. सो इट इज बेसिकली लॉन्गर बोन. Long bones are found in the arms and legs as well as in the fingers and toe. So अगर हम ये क्वेश्चन करें कि व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ द लॉन्ग बोन्स, यानी कि लॉन्ग बोन्स हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ होती है. सो लॉन्ग बोन्स हमारे बॉडी में बहुत सारे हैं, लाइक आर्म्स, आर्म्स में ह्यूमरस है, रेडियस है, अल्ना है. और लेग्स की बात करेंगे तो लेग्स में फीमर है, टिबिया है, फिबुला है. सो दीज आर द वेरियस एग्जांपल ऑफ द लॉन्ग बोन्स. Long bones functions as a lever and they move when muscles contract. So basically जो long bones होते हैं वो हमारे बॉडी में एज ए लीवर काम करते हैं and they also move when the muscle contract. जैसे कि हम इस इमेज में देख सकते हैं, फर्स्ट इमेज, दिस इमेज इज द एक्चुअली एग्जांपल ऑफ द अपर आर्म, अपर एक्सट्रीमिटीज, जहाँ पे हम देख सकते हैं दिस इज द एग्जांपल ऑफ रेडियस एंड दिस इज द अल्ना, एंड जो इसके ऊपर का पार्ट है ये हमारा ह्यूमरस है. सो ये जो एग्जांपल है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द लॉन्ग बोन इन द अपर आर्म और आर्म. अपर आर्म एक्चुअली हमारा जो ये ऊपर का ह्यूमरस का पार्ट है, दिस इज कॉल्ड अपर आर्म एंड दिस इज योर लोअर आर्म. सो दिस इज द एक्चुअली, इसको हम अगर कॉमनली दोनों को एक साथ बोले so this is called upper extremities. सेकेंड जो है वो हमारा है femur. So this is the image of the femur, example of the femur bone, and this is the longest bone in the human body. यानी कि ह्यूमन बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है, इसकी जो लेंथ है वो सबसे ज्यादा होती है, एंड ऑल्सो कॉल्ड एज ए थाई बोन. समटाइम हम इसको थाई बोन भी कहते हैं. सो अगेन इट्स एग्जांपल ऑफ लॉन्ग बोन. एंड थर्ड वन इज द एग्जांपल ऑफ द लोअर लेग. आप लोअर लेग में देखेंगे दो बोन्स होते हैं बेसिकली. फर्स्ट इज द टिबिया एंड सेकंड इज द फिबुला.
टीबिया है यहाँ जो ये थोड़ी सी थिक है बोन, जो थोड़ी सी मोटी यहाँ पे है, दैट इज कॉल्ड टीबिया। एंड सेकंड बोन जो यहाँ पे थोड़ी सी नैरो, जो पतली बोन है, दैट इज कॉल्ड फिबुला। एंड आप देखेंगे यहाँ पे जो फुट वाला एरिया है, टीबिया फिबुला के बाद जो ये एरिया होता है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एंकल जॉइंट हैविंग द टार्सल बोन। सो बेसिकली टार्सल बोन जो है, ये इसको हम लॉन्ग बोन में इंक्लूड नहीं करते हैं। इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज द टार्सल बोन। जो टार्सल के बाद होता है दैट इज द मेटाटार्सल। आप अगर देखेंगे यहाँ पे, दिस पार्ट इज कॉल्ड मेटाटार्सल, जो कि हमारा फुट वाला पार्ट होता है। एंड मेटाटार्सल इज द एग्जांपल ऑफ लॉन्ग बोन। मेटाटार्सल एंड phalanges, जो फिंगर्स होते हैं हमारे, लाइक सेम ऐसे ही हमारे हैंड में होते हैं, जो हमारा हैंड वाला एरिया होता है, दैट इज कॉल्ड, जो पाम का एरिया है, दैट इज कॉल्ड long bones and phalanges also. सेकेंड हमारा है शॉर्ट बोन। शॉर्ट बोन में क्या होता है? अ शॉर्ट बोन इज वन दैट इज क्यूब लाइक इन शेप, बीइंग अप्रोक्सीमेटली इक्वल इन लेंथ, विड्थ एंड थिकनेस। सो बेसिकली जो शॉर्ट बोन्स है, ये हमारे क्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे कि हम इस इमेज में देख सकते हैं, ये जो बोन्स है, ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इनकी लेंथ, विड्थ और हाइट अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट होते हैं। The basic example of the short bones is a carpal and tarsal. So, what is carpal bone? Basically, अगर मैं in simple words इसको explain करूँ, so carpal bones जो है, ये basically हमारे wrist में होते हैं, जो हमारा hand है, जो हम hand को move करते हैं, the space which allow to move the hand is called wrist joint basically. And wrist joint में जो responsible है, that is carpal bone. कार्पल बोन एक बहुत छोटे छोटे बोन्स होते हैं, जो कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, कलर कोडिंग किया हुआ है। So the colored part is called carpal bone. And again, same situation in the foot also. And the ankle joints. The ankle joints में जो bone होते हैं, that is called tarsal bone. So carpal and tarsal is the example of short bone. The only short bones in the human skeleton are in the carpals and tarsals in the ankle. Carpal in the wrist and tarsal in the ankle. Short bones provide the stability and support as well as some limited motions. So short bone जो है, ये basically it will provide the stability. So ये हमारे बॉडी पे एक stability provide करवाता है। जैसे कि जो टार्सल बोन है, it will form the ankle joints, and उस joint के बेस पे हम अपने बॉडी को स्टेबल कर पाते हैं, हम खड़े हो पाते हैं। So it will also provide the stability. सेकेंड है सम लिमिटेड मोशंस, यानी कि जो ये शॉर्ट बोन्स है, ये हमारे बॉडी के कुछ लिमिटेड मोशंस को भी अलाउ करती है। फॉर एग्जांपल, जो हमारे हैंड के मूवमेंट होती है, जो हमारे फिंगर के मूवमेंट होती है, दैट इज ड्यू टू द कार्पल बोन। अगेन, जो हमारे फुट की मूवमेंट होती है, ड्यू टू द टार्सल बोन। Next is the flat bone. What is flat bone? The bones have the broad surface to shield the organ and attach the muscles. So what is the shielding of the organs? The bones having the broad surface. It means कुछ ऐसे bones होते हैं जिनका surface काफी broad होता है, and to shield the organs. It means it will provide a support. It will provide a protection to the vital organs in the human body. ये basically जो हमारे body के vital organs होते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। एंड ऑल्सो प्रोवाइड अ मसल्स अटैचिंग सरफेस, यानी कि ये मसल्स को हमारे बॉडी में अटैच होने का एक सरफेस भी प्रोवाइड करवाते हैं। सो दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी। फॉर एग्जांपल, इट इंक्लूड द क्रेनियल बोन इन द स्कल, स्कैपुला इन द शोल्डर एंड sternum, also known as the breastbone and the ribs. So these are the example of the flat bone. जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, कुछ कलर कोडिंग वाला पार्ट है। दिस कलर कोडेड पार्ट इज कॉल्ड फ्लैट बोन। सो जो फर्स्ट है, दैट इज अ क्रेनियल बोन। क्रेनियल बोन बेसिकली हमारे स्कल बोन होते हैं, जिसका काम होता है वाइटल ऑर्गन को प्रोवाइड सपोर्ट प्रोवाइड करना, उसको प्रोटेक्ट करना। आप यहाँ देखेंगे, जो हमारा क्रेनियल बोन होता है, कि बेसिकली हमारे ब्रेन को सपोर्ट करता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द एनी काइंड ऑफ फिजिकल शॉक, फिजिकल डैमेज, फिजिकल इफेक्ट। सेकंड यहाँ पे हमारे हैं रिब्स। रिब्स बेसिकली हमें बहुत सारे वाइटल ऑर्गन को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। लाइक इसके अंदर हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, जो कि एक मेजर रोल प्ले करते हैं हमारे बॉडी के फंक्शंस के लिए, लाइक हार्ट एंड लंग्स। सो इसको एक फिजिकल डैमेज होने से सेफ रखता है, एक सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट इज द स्कैपुला। आप देखेंगे जो थर्ड वाला इमेज है, इज कॉल्ड स्कैपुला। स्कैपुला एक बेसिकली एक ब्रॉड सरफेस प्रोवाइड करवाता है, एक
मसल्स को अटैच करने के लिए एक मेजर सरफेस प्रोवाइड करवाता है। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ द फ्लैट इन द ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट हमारा है इरेगुलर बोन। व्हाट इज इरेगुलर बोन? An irregular bones is one that does not have any easily characterized shape and therefore does not fit any other classification. It means जो कुछ bones ऐसे होते हैं हमारे बॉडी में जिनका ना तो कोई शेप होता है ना ही कोई साइज होती है। It means इस bone को हम किसी अदर कैटेगरी में नहीं कैटेगराइज कर सकते हैं। So this bone these are the called irregular bones. तो इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं वो हम आगे देखेंगे। These bones tend to have a more complex shape like the vertebra that support the spinal cord and protect it from the compressive force. So vertebra is the example of the irregular bones. Vertebra including the cervical vertebra, dorsal vertebra and lumbar vertebra. Vertebra basically हमारे जो spine है, commonly known as the backbone also. वर्टिब्रा को हम कॉमनली बैकबोन भी कहते हैं। सो इनकी जो शेप होती है एंड जो इसकी स्ट्रक्चर है वो वेरिएबल होता है। सर्वाइकल की जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होती है। जो आपके लंबर है एंड थोरेसिक है उसकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। सो यही कारण है कि हम इसको इरेगुलर बोन कहते हैं। इसकी जो शेप एंड स्ट्रक्चर्स हैं वो डिफरेंट होता है। Many facial bone, particularly the ones containing the sinuses, are classified as the irregular bones. कुछ facial bones भी होते हैं basically containing the sinuses. So what is the sinus? The sinus is the air-filled cavity. Basically, these bones provide a facial structure. It means जो साइनस कंटेनिंग बोन्स हैं ये हमारे बॉडी के जो हमारे बेसिकली फेस का जो शेप है, फेशियल जो इंप्रेशन है, फेशियल जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो फेशियल शेप्स हैं, इसको प्रोवाइड करने का काम करता है। हमारे जो फेस की स्ट्रक्चर है, फेस की जो शेप है, वो कैसा होगा? इट इज डिपेंड अपॉन द sinuses. And these are the example of irregular bone. So we can see in this image, this actually, this is the example of vertebra. And second is the uh, facial bone. जहाँ पे color coding part है, these are the facial bone containing the sinuses. Next is the sesamoid bone. जो अलग classification है bone का, that is called sesamoid bone. A sesamoid bone is a small round bone that, as the name suggested, is shaped like a sesame seed. These bones form in tendons where a great deal of the pressure is generated in the joint. So sesamoid bone is very important for the joint, basically for the knee joint. The sesamoid bones protect the tendons by helping them overcome compressive force. Sesamoid bones vary in number and placement from person to person, but are typically found in the tendons associated with the feet, hands and neck. So basically जो sesamoid bones हैं, इसके जो नंबर है वो वेरिएबल होते हैं, ये फिक्स नहीं होते हैं। Commonly it is found in at the knee joint. जो हमारे knee joints होते हैं वहाँ पे एक छोटा सा बोन होता है that is called knee cap. जैसे कि हम इस इमेज में देख सकते हैं। दिस येलोइश पार्ट इज कॉल्ड अ नी कैप। जहाँ पे येलो एरिया दिख रहा है इस इमेज में, ये हमारा नी कैप है एंड इस नी कैप का ही नाम होता है सिस्माइड बोन्स। सो ये कॉमनली सब जगह हर एक पर्सन में होते हैं, बट इसके अलावा भी कुछ एडिशनल बोन्स हो सकते हैं लाइक फीट में, हैंड्स में एंड अदर पार्ट्स में भी हो सकते हैं। सो दीज आर द काइंड ऑफ सिस्माइड। The patella are the only sigmoid bones found in common with every person. So patella एक बोन ऐसा है जो कि commonly हर एक पर्सन में as a sigmoid bone available होता है. So these are the classifications of the various bone according to their shape and size. Thank you.